Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. You can take some question answers. Beyond that, मेरा इच्छा था we will just sing one or two भजन. हम एक दो भजन गाएंगे जो ये नम्रता के भाव को दर्शाता है, कैसे वरिष्ठों का आश्रय लेना है, गुरुजनों का आश्रय लेना है. If time permits, we can sing 2-3 songs of Bhakti Vivata. Anyone has any questions, any comments? Yeah, very much. Go ahead. Hare Krishna, Prabhuji, Dandot Pranam. You explained it so beautifully, Prabhuji. I just have some takeaways. अपने SSI that stays in my mind. Tatvidi Pranipate, Pariprashne Seveya. So immediately we can connect it to SSI. So आपने वो submissive bhav, you stressed on that, how it is very important, and beautifully you gave examples. Sanatan Goswami का, रूप सनातन गोस्वामी का, हरिदास ठाकुर का, रामानुजाचार्य का, where he tried to meet Goshtipurna, his guru, 70 times. Then how Sudama and Krishna served the guru. So equally you also explained Guru ka bhav bhi, Guru also approaches, Krishna, you get the Lord when that submissiveness is both with the Guru and with the Lord. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, actually two questions. Maybe I don't know if I can frame it properly, but मैं try कर दूंगी because it's not meant to hurt anybody. Slightly related to the first verse, where Prabhupada ji, where it is said that even though you're a woman, this it will be given to you ऐसे भाव से यदि आप अप्रोच करते हो भगवान को. प्रभु जी, मेरा when I read this, my first thought was सभी जगह में we are taught that ये bodily concept of life को हमें cross करके we cannot see at the bodily level. So यहाँ how do we reconcile that, Prabhu ji? Because thoda when you say a woman less intelligent, because it is in a way related to the body, and how do we reconcile that? If you can share your thoughts, Prabhu ji. Hare Krishna. That's my first question. या लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ये प्रश्न पूछेगा. So the same mood you will see even in Kunti Maharani's prayers. Even Kunti Maharani, जब वो भगवान कृष्ण को अप्रोच करती है, she also has the same mood. वो बोलती है कि आपको समझना बड़े बड़े ज्ञानी के लिए मुश्किल है, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, मैं कैसे समझूं? This is the mood. So why are this question which is always there, that why are women considered less intelligent? One understanding is that women mostly are, the attraction to the body is a little more stronger in the body of a woman in terms of decorating the body and attachments to so many things. So Kunti Maharani basically, because she's a woman, वो एक स्त्री है, उनको लग रहा है कि her attachment to her children, her attachment to husband, family and so many things are very binding. तो इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, my dear Krishna, you try to please break all these attachments. So generally the women are considered less intelligent in terms of understanding scriptures, understanding so many things, following the path of Vairagya. Very difficult, right? But having said that, it is not भगवान के भक्ति करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करने के लिए they have full facility. Srila Prabhupada gives this understanding also. देखिए प्रभुपाद के परपोर्ट्स और हमारे शास्त्रों में एक बैलेंस है. You have to understand that balance. किसी भी एक्सट्रीम में फंस गया ना, हम समझ नहीं पाएंगे, right? So Prabhupada in one
one level, Prabhupada does mention that women are considered to be less intelligent. But Prabhupada in many places, Prabhupada बहुत जगह को बताते हैं, किसी भी एक आध्यात्मिक संस्थान में, किसी भी एक सत्संग में या किसी भी एक पूजा विधि में जहाँ पे भी होती है, एक religious function में, you will always find women more than men. This is an accepted fact everywhere. और इस्कॉन में तो हमको बहुत अनुभव है. In any satsang, the number of ladies are always more than the number of men. और प्रॉपर वहां पे बताते हैं, because the women are simple at heart. पुरुषों का हृदय बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? वुमेन का हृदय जो है इस तरह से बहुत सरल है. They are naturally attracted to Krishna. उनको बहुत लॉजिक की जरूरत नहीं है. उनको पता है भगवान की भक्ति करना है, वो कर लेते हैं. They just do it. So Prabhupada gives that credit there also. Right? So that balance is there both ways. प्रभुपाद के पास एक बार यमुना माता जी आई, प्रभुपाद की बहुत सीनियर डिसाइपल, और उन्होंने प्रभुपाद उनसे बहुत प्रेम करते थे. प्रभुपाद ने ग्रेट अफेक्शन फॉर यमुना माता जी. तो प्रभुपाद के पास आई और उन्होंने प्रभुपाद को लगभग, जैसा आपका ही प्रश्न है, उन्होंने पूछा प्रभुपाद, प्रभुपाद आर वुमेन लेस इंटेलिजेंट? प्रभुपाद बोले, इफ यू थिंक यू आर अ वुमेन देन यू आर लेस इंटेलिजेंट. प्रभुपाद बोले, आप आत्मा हो, ये सब के बारे में आप चिंता क्यों कर रहे हो? जस्ट प्रैक्टिस भक्ति एंड बी हैप्पी. बट द पॉइंट इज, द एसेंस इज व्हाट, इवन इफ यू आर इन द बॉडी ऑफ अ वुमन, एनी सिचुएशन दैट यू आर इन, इफ दैट थिंग इज हेल्पिंग यू बिकम हम्बल, परिस्थिति में व्यक्ति नम्र भाव स्वीकार कर पाता है, देन दैट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी. So that's the overall understanding of this. Definitely it is not to stress on the bodily level, पर ये भक्त का स्वाभाविक भाव है. Right? Devotee, because she is in the body, so she feels that I'm in the body of a woman, so I'm not qualified to read scriptures so much. So generally आप देखते हैं जो ज्ञानीज होते हैं, those who are ज्ञानीज, you will never find a woman coming in the category of that. जो शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत सीखते हैं, you never find too many women coming there. या जो वैराग्य का मार्ग लेके जंगल चले जाते हैं, hardly you find women coming in that picture. So this is the mode. हम ये भी कहानी आता है भागवतम में, सती जो है दक्ष की जो पुत्री है, वो शिव जी के साथ विवाह करती है. You know the story, right? She gets married to Shiva. और दक्ष शिव जी से बहुत ईर्ष्या करता है, शिव जी के प्रति बहुत अपराध करता है. तो एक दिन सती कैलाश में बैठी है शिव जी के साथ और देखती है कि विमान में उनके सब जो बहनें हैं, his sisters, वो सब लोग विमान में बैठ के दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं. They are all going to the यज्ञ of दक्ष. तो सती शिव जी को बोलती है, मुझे भी जाना है, I also want to go. शिव जी बोलते हैं, देखो आपके पिताजी ऑलरेडी मेरा अपमान कर रहे हैं, आप वहां पे जाओगे तो और अपमानित होगे, अब मत जाइए, मेरा सुझाव है मत जाइए. पर सती सुनती नहीं है. She is not able to hear. उसको पता है, she knows that she is not supposed to go, पर वो अटैचमेंट इतना है अपने फैमिली के प्रति. और प्रॉपर वहां पे लिखता है, क्योंकि सती एक स्त्री है, वो जब देखती है उनके सब बहनें जा रहे हैं यज्ञ में, तो सती के मन में भी ये भाव था, मुझे भी आभूषण पहन के जाना है, अपना आप को श्रृंगार करके जाना है. एंड शी गोज देयर. और वहां पे जाके जैसे शिव जी ने बोला था, वहां पे अपमानित होती है और सती अपना शरीर त्याग देती है. So Prabhupada explains in that places also that how Sati, even though she is the wife of Shiva, हालांकि शिव जी की पत्नी है, तो she has these issues ना, जहाँ पे उनको अपने आप को ड्रेस करना है, श्रृंगार करना है, दिखाना है. She wants to go and socialize with so many people. Yeah. So see, these are things that come in the the body of a woman. Therefore, in some angles, the women are considered less intelligent in these terms. Is it okay? Yes, Prabhuji. Certain parts I'm able to understand. So I'll read read it more also to get a better understanding. Obviously, it's also my arrogance and my this thing which makes me think that way. So obviously, humility aana chahiye. That's the learning, because jo bhi we are approaching anybody, whatever the bodily this thing is, humility hona chahiye. That submissiveness at its peak hona chahiye, because we're all in the path of bhakti and our goal clear hai. And jo kuch facilities have been given to us, uske hisab se use karke for this purpose. Prabhuji, I think I had one more question, but Gopi Manohar Prabhuji has raised his hands. Let me, Prabhuji. Thank you, Mother. Just
I think I just wanted to check with you, Prabhu. There is like this like uh, we have to come out of this, like Mataji was pointing out, body consciousness. But still, uh, if we see, we don't. Whenever there is Prabhus and Mataji, there is always segregation. So we are out of trying to come out of this body consciousness, but still we maintain that integrity. Okay, Mataji is to be having, whether they are dancing, they are eating, that should be separate, and Prabhuji should be separate. Even if we see all the sannyasis, they are away from all this body consciousness, but still there is a special instruction that no woman disciple should meet Maharaj in being alone, and when Maharaj is alone. So it is not that they are body conscious that this is woman, I am man, but still there are some rules, like whatever body we are, and we need to follow that. So I just wanted to check with you, Prabhu, what do you have, Prabhu? The thoughts you So wanted. I think आपका बहुत important point है. I think it connects back to माताजी's point. See, माताजी का ये प्रश्न था कि देवोती ये क्यों बोल रही है कि मैं स्त्री हूँ, even though she may be completely transcendental, why she is on this bodily level. So the point is, जैसे आपने बताया, very nice point, that even though someone may be very highly elevated, still to maintain a culture in society is very important. So from that point of view also devotee is asking this question. जैसे आप बोल रहे हो ना, someone may be very elevated, like Bhaktisiddhanta Saraswati was a liberated soul, but Bhaktisiddhanta Saraswati never met with any female, even like grand disciple alone. So there is a certain culture. That culture has to be maintained. That's definitely very, very true, very important. But one more thing I just wanted to stress on this overall part. देखिए, हालांकि हम ये बोलते हैं शास्त्रों में, ये एक स्टेटमेंट है कि that women are considered to be lesser. बट अगर आप देखेंगे हमारे संप्रदाय में, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हम इसी पे जोर देते हैं, बट यू सी आवर संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में सबसे वरिष्ठ वैष्णव, द ग्रेटेस्ट डिवोटीज राधा रानी एंड द गोपीज, राइट? राधा रानी और गोपियों का हम आराधना करते हैं, वी आर द ग्रेटेस्ट डिवोटी. अभी कार्तिक महीना आ रहा है, दामोदर मंथ, द होल मंथ वी आर वर्शिपिंग यशोदा माता, और ब्रह्मा जी, शिव जी, ऑल द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, सत्यव्रत मुनि, वो सब लोग यशोदा का पूजा करते हैं. देवहूति माता, कुंती महारानी प्रेयर्स इन द एंटायर भागवतम, पूरे भागवतम में अगर किसी का प्रार्थना सबसे ज्यादा सुनाया जाता है या लोग सुनते हैं, बोलते हैं, these are the prayers of Kunti Maharani's prayers, the most beautiful prayers, even great sadhus are remembered. So this is also there where we considered that these are the greatest personalities. हमारे संप्रदाय में महाप्रभु और नित्यानंद के बाद आगे जाके जो सबसे प्रमुख आचार्य बनते हैं वो है जानवा माता, the wife of Lord Nityananda. She became the most greatest acharya. और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो इतने बड़े विरक्त लोग थे, वो भी जानवा माता का आश्रय लेते थे. आप प्लीज हमको आशीर्वाद दें. So this mood is always there where we are trying to situate ourselves beyond this level and appreciate everyone as Vaishnavas. वैष्णव और वैष्णवी को हम सबको सम्मान देने का प्रयास करते हैं. So I think overall, beyond all this, I think what we should focus is on the mood of humility, the mood of being a sincere, humble Vaishnava.